I hope you are able to see the screen properly. So today we'll see about the congestive cardiac failure. Again, it is the last chapter from your drug acting on cardiovascular system. Actually, one more chapter is there, which is also considered under your drug acting on cardiovascular system, known as a diuretics. But we are going to see it after this. So we'll first see the urinary system and then we'll take diuretics. Okay, because diuretics are the class of drug, they are used in the your hypertension as well as your congestive cardiac failure as well as in the arrhythmia also. So diuretics they are also considered as a drug acting on CVS. So today we'll see this drug used in the congestive cardiac failure. So obviously the name indicate there is a congestive cardiac failure. Now why there is a congestion? You have to identify the reasons. Congestive cardiac failure. Drugs used in the congestive cardiac failure. What do you mean by congestive cardiac failure? Simple, very simple basic question is there. So congestive cardiac failure मतलब क्या होता है? Congestive मतलब कंजेशन हो रहा है. किसका कंजेशन हो रहा है? ब्लड का कंजेशन हो रहा है. Cardiac failure मतलब क्या है? Your heart is not able to pump the blood. So due to congestion. Now why there is a congestion? Either there is an increase in the preload or either there is increase in the afterload or there might be decreased contractility of your myocardium or there might be टिश्यू नेक्रोसिस इन द मायोकार्डियम. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब क्या होता है कि योर हार्ट इज नॉट एबल टू पंप द सफिशिएंट ब्लड टू रिक्वायर द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ योर बॉडी, टू रिक्वायर द सर्कुलेशन ऑफ योर बॉडी. सो why your heart is not able to pump the blood? Because either there is a defect in the or either there is a excessive load on your heart. First reason, there is either increased preload or increased afterload. Second, either there is a increased automaticity of your heart. If there is increased heart rate normally ऐसा लगता है कि हार्ट रेट अगर इंक्रीज हो गया तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, है ना. बट इन द फेलिंग हार्ट इट इज नॉट. जो हार्ट फेल हो रहा है उसमें हार्ट रेट बढ़ गया तो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है नहीं. नॉर्मली ये बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ता नहीं. एक्साइटेबिलिटी, there is a decreased excitability of your myocardium, there is a decreased contractility of your myocardium due to either myocardial infarction or myocardial ischemia. तो ischemia हो गया मायोकार्डियल में. मायोकार्डियल सेल को अगर डेथ हो गया मायोकार्डियल सेल का, मायोकार्डियल मसल मायोसाइट्स, if there is a death there is a tissue damage, tissue loss of tissue, myocardial tissue. Okay, so due to that what happens, your myocardium is not able to pump the blood, sufficient blood to meet your body's demand. Okay, that is known as a congestive cardiac failure. So cardiac failure, if cardiac tissue is not, what is the role of your heart? So heart should able to pump the blood. heart का काम होता है कि heart को blood pump करना है. जितना ब्लड उसके वेंट्रिकल में आता है उतना ब्लड उसको पंप करना है ना. राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप करना है उसको पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से ब्लड पंप करना है उसको आओर्टा में. आओर्टा से ब्लड जाएगा आपके पूरे बॉडी में और वो बॉडी का रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा. बट क्या होता है कि इसमें कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर मतलब क्या है कि कंजेशन हो रहा है और कार्डियक फेल है. तो कंजेशन तो बाद में होता है, पहले कार्डियक टिश्यू का डैमेज होता है. सो there are numerous reasons behind the congestive cardiac failure. Suppose for example these things are not mentioned on the slides but you have to note down your, or if you can you have to note down, you have to note down, or if you can remember it's okay. Okay, so one of the reason for congestive cardiac failure, prolonged hypertension. So if you are suffering from hypertension for long period, so again it is a predisposing factor for cardio, that is a congestive cardiac failure. तो अगर बहुत समय से आपको हाइपरटेंशन है उसमें भी आपको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का चांसेस बनता है. राइट. सेकंड रीजन होता है थायरोटॉक्सिकोसिस, इंक्रीज द थायराइड ग्लैंड का, थायराइड हार्मोन्स ज्यादा हो गए तो थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से होता है. थर्ड रीजन होता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, मायोकार्डियल इश्चेमिया. दीज रीजंस आर देयर. देन फॉर अनदर रीजन इज द कंजेनाइटल हार्ट डिसीज. कंजेनाइटल हार्ट डिसीज मतलब जेनेटिक कोई हार्ट में डिफेक्ट है, जैसे valves defect, defective valve है आपका हार्ट में, that also leads to congestive cardiac failure. Again, Wolff-Parkinson-White syndrome, we have already seen what is Wolff-Parkinson-White syndrome. So there is a defect in the conduction. So Wolff-Parkinson-White syndrome is also it is also one of the
cause for congestive cardiac failure. So basically congestive cardiac failure means what? Your heart is not able to pump the sufficient amount of blood to meet the your body's demand. Now you know that we have already seen few definitions under the arrhythmia. Okay, you know that your heart has a cells known as a myocytes. So your heart has a muscular layer, middle muscular layer, and that is known as a myocyte. That is known as a myocyte. So myocytes or heart cell. Okay, so you can say there are different types of myocytes in a myocardium. जो मिडल लेयर होता है आपका हार्ट का उसमें दो टाइप के सेल होते हैं. सो फर्स्ट फर्स्ट जो सेल होते हैं उसको बोलते हैं अपन कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स. So your myocardium has a two type of cell. First one is a contractile cell, and second one is known as a uh, conducting system. Second one is known as a conducting system. Or you can say excitable cell or conducting system. So what is meant by contractile cell are responsible for the contraction or responsible for the excitation. So contractile cell means myocytes, muscle fiber. Okay. So because they contract and that's why your heart is able to pump the blood. They are the contractile cell, myocyte fibers. Okay. Then conduction system is there are certain particular cells in a myocardium. मायोकार्डियम में दो टाइप के सेल होते हैं. एक तो सेल कौन से है कि जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल. सो दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड योर हार्ट विल पंप द ब्लड. सेकंड सेल होते हैं आपकी कंडक्टिंग सेल्स और यू कैन से कंडक्शन सिस्टम. सो इन दैट यू आर गोइंग टू हैव एसए नोड which will generate the impulse, AV node, bundle of his Purkinje fiber. So all these cells they are not excitable cell, they are not a contractile cell. ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते है ना, एसए नोड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. एवी नोड के यहाँ पे जो बंडल ऑफ हिस है Purkinje फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते. दे आर द कंडक्टिंग सेल्स, दे आर द कंडक्टिंग टिश्यू, conduction system of your heart. Contractile tissue is nothing but the myocytes. Myocytes are the contractile tissue. So myocytes will contract and then ventricles will pump the blood, right? So there are two type of tissue. First one is a contractile tissue and second one is a conducting tissue or tissue or cell. You can see. You know that impulse they are electrical activity which is generated. Okay. So in the heart impulse are generated by the SA node. The SA node is known as a pacemaker that is transmitted to AV node. AV nodes से लेके conduct होता है वो. So from AV node is conducted by bundle of His then distributed to a Purkinje fiber, left and right Purkinje fiber to the respective left and right ventricle. Okay, जैसे impulse वहाँ पे जाता है and the contractile tissue of your heart, that is myocardial myocytes, so they get excited and they get contracted. So there are few terms you have to understand. So first term is automaticity. What is meant by automaticity? Okay, so it is a property of your cardiac cell produce a action potential. So your whole cardiac tissue is able to produce a impulse. Most of the okay, so all the cardiac tissue can produce impulse. So known as automaticity. So it is a property of cardiac cell to undergo spontaneous diastolic depolarization. That is known as automaticity. So property of cardiac cell to undergo diastolic depolarization, spontaneous diastolic depolarization. मतलब एक depolarization होगा उसके बाद में ऑटोमेटिकली दूसरा depolarization होगा. That is known as automaticity. So it is a property of cardiac cell to undergo spontaneously and okay to undergo spontaneously undergo spontaneous depolarization. Am I audible to you? Audible आएगा? Am I audible? Okay. Automaticity means property of cardiac cell to undergo spontaneous depolarization. Okay. So every cardiac cell is able to produce the impulse, but most of the impulses they are produced by SA node. The frequency of producing impulse for the SA node it is the highest. That's why SA node is known as a pacemaker of your heart. Now excitability means what? Excitability means it is the property of cell to undergo depolarization when there is a impulse to respond the impulse in the form of depolarization. There is no excitability. Property of cell undergo depolarization after receiving a signal or after receiving an impulse known as excitability. What it means by contractility? So it is a property of cardiac cell to contract, okay, to contract, and that contraction result in the contraction of your heart, okay, systole of your heart, okay. Then cardiac action potential. Cardiac action potential means it is a one cycle. It is a one cycle. There is a
movement of, in this there is a movement of intracellular movement of some ions, movement of ions, okay, rhythmic movement of ions, rhythmic movement either inward and outward, both rhythmic movement of inward and outward ions in the cell to produce the depolarization and hyperpolarization known as a cardiac action potential. Cardiac action potential. So you know that cardiac action potential. So it is classified. It is mentioned in the different pages. So normally in the cell, intracellular, normally in the cardiac cell, in every kind of cell, neuronal cell also, muscle cell also. So there is a intracellular negativity. सेल के अंदर नेगेटिव पोटेंशियल होता है, दैट्स व्हाई यू कैन सी द वोल्टेज दैट इज अराउंड -90, so -90, -100. So intracellular negativity is there in the cell. सेल के अंदर नेगेटिविटी होता है ना, सेल के बाहर पॉजिटिविटी होता है, क्योंकि बाहर क्या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, बाहर कैटायंस हैं, सेल के अंदर पोटेशियम रहता है एज अ कैटायन, बाकी सब एनायन. दैट्स व्हाई सेल हैज अ negativity. Inside cell is there is a negativity. Now what happened? So as I told you, action potential is nothing but the, it is a sequence of event that there is an inward movement of few ions or outward movement of ions resulting into a depolarization and hyperpolarization. Depolarization and hyperpolarization, that is known as a cardiac action potential. Okay, so as I told you, there is a -90 or minus negative potential is there in the cell. So when this negative potential will reach up to a particular पोटेंशियल से, फॉर एग्जाम्पल -90 से अगर पोटेंशियल आता है -65, -70 ना, यहाँ तक अगर पोटेंशियल आता है, कैसे आएगा? बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ, बिकॉज ऑफ द लीकेज और बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ पोटेशियम आयन इनसाइड द सेल. सो -90 से आपका पोटेंशियल आता है नियर बाय -60, 65, ओके, or 70 you can say. Now at this potential there is a very slow movement of potassium ions, okay, at this potential. Now once this potential is reached, once this potential is attempt or attended, so what happens? There is a rapid movement of sodium ions inside the cell, rapid movement of sodium ions inside the cell, and that causes the phase 0 known as a rapid depolarization. Rapid depolarization. So you know that inside the cell negative potential is there. यहाँ तक देखो -75 पोटेंशियल, एग्जांपल 70, 65, so -70 या फिर 75 बोल सकते हो. 75 -75, that is a potential, that is a known as a threshold potential, that is known as a threshold potential. So a level of intracellular negativity at which there is a abrupt entry of sodiums, that is known as a sodium ion, that is known as a threshold potential. So normally in the cell minus potential is there, -90 millivolt. So if it comes to around -75, -60, okay, so that potential at which there is entry of sodium ion inside the cell abruptly, suddenly, that is known as a threshold potential. Now there is entry of sodium, so sodium is a cation, you know that positive charge होता है उसके ऊपर, and because of that positive charge, so potential is a disturbed, so known as a depolarization. So cell potential will go up to positive, say for example +15, +15 तक पोटेंशियल जा सकता है. दिस फेज इज नोन एज अ डीपोलराइजेशन, रैपिड डीपोलराइजेशन, ओके, known as a phase 0, and that is because of the entry of sodium ion inside the cell, entry of sodium ion inside the cell, and that result in the phase 0, the phase 0 of action potential. phase 0 of action potential. action potential क्या होता है? That is a rhythmic inward and outward movement of ions, rhythmic inward and outward movement of ions in the cell. Okay, so phase 0 is responsible, okay, phase 0 is due to the entry of sodium ions. Okay, now this phase 0 is known as the initial or rapid depolarization. Now after that, as there is a disturbance of potential, your cardiac cell will try to re-establish, will try to control it. Okay, so therefore there is again, okay, again there is a rapid repolarization for only short term, for short term rapid repolarization. So that's why this is known as a rapid repolarization. ये फेज जो है repolarization, rapid phase 1 is known as a rapid repolarization. ये जो फेज है phase 0 known as a rapid depolarization, rapid depolarization. Well, now depolarization is due to the entry of sodium ion in the cell, inside the cell. Now repolarization is because of the
stoppage of entry of sodium ions and removal of your potassium. Okay, and some chloride will also enter in the cell. That's why there is a short notch over here known as a known as a known as a fast repolation or quick repolation. Quick depolarization. After that, quick repolation. Now after that, there is a entry of slow calcium inside the cell to maintain the depolarization, known as a phase second, okay, known as a plateau level, After that, okay, so you see phase zero, okay, and phase two. So they basically are the depolarization phase. Okay, phase zero is a rapid depolarization, phase two is a slow depolarization. Now all tissues और all cells you can say नर्वस टिश्यू जो होता है नर्व सेल जो होता है या फिर आपको मसल सेल जो होता है तो वो और कार्डियक सेल मसल सेल और कार्डियक सेल और न्यूरोनल सेल और कार्डियक सेल वो डिफर कहाँ पे करता है यही पे करता है सो योर कार्डियक सेल विल हैव phase second that is a slow entry of calcium that is a plateau level okay and your neuronal cell your skeletal muscle cell it will not have this second phase okay so that is the difference that's why okay cardiac in between two contraction there is a small gap due to this phase okay so phase 0 quick depolarization phase 1 quick repolarization phase 2 continuous depolarization for short period known as a plateau level and then phase 3 is known as a repolarization phase phase 3 क्यों होता है phase 3 is because of the stoppage okay so because of the stoppage of calcium ion and removal of potassium तो कैल्शियम जो अंदर जा रहा था phase सेकंड में यहाँ पे कैल्शियम अंदर जाना बंद हो जाएगा और पोटेशियम बाहर निकलना चालू हो जाएगा potassium will leak out from the cell to establish the normal potential of cell now phase 0 क्या होता है phase 0 is nothing but phase 0 of action potential is nothing but known as a restoration of normal action potential restoration of normal negativity of cell so at this there is a removal of calcium there is removal of sodium whatever entering in the cell and it will re-establish the its original potential that is a negative potential okay? So that's how your heart will have okay so during the phase 0 and phase 2 there is a okay phase 0 phase 2 there is a contraction of your muscles cardiac muscle now in the phase 3 and phase 4 there is a relaxation of your cardiac muscle तो आपका हार्ट का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कब होता है जब डीपोलराइजेशन होता है तो डीपोलराइजेशन कब होता है फेज 1 में और फेज 0 में और फेज 2 में phase 0 phase 2 so it is a depolarizing state okay? and phase 3 phase 4 it is a repolarizing stage are you getting or not समझ रहे आपको यहाँ पे ये important है basics important है yes or no so phase 0 is a depolarization phase and phase 2 is also depolarization now in the phase 0 phase 1 phase 0 and phase 1 is a quick repolarization ये वैसे भी छोटा होता है इसको भूल जाओ ठीक है so this phase 0 and phase 2 are a depolarization phase and during this there is a contraction of your muscle heart muscle and phase 3 phase 4 there is a repolarizing phase so at this it is a dilation phase okay you can say now during phase 0 and phase 2 so during whenever there is entry of cation there is a depolarization state so during phase 0 and phase 2 if another stimulus is there okay so if another stimulus comes during phase 0 and phase 2 in between these two so there is a no response from cardiac cell to that stimulus जब फेज 0 चल रहा है मतलब ये पूरा एक्शन पोटेंशियल का काम चल रहा है अभी फेज 0 हुआ है फेज 2 चल रहा है फेज 0 भी डीपोलराइजेशन है फेज 2 भी डीपोलराइजेशन है तो उस टाइम पे अगर कोई अनदर स्टिमुलस आता है कार्डियक सेल को कार्डियक सेल विल नॉट रिस्पॉन्ड इट okay so if during the phase 0 and phase 2 if another stimulus is there doesn't matter whatever strength is there बहुत बड़ा भी स्टिमुलस है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है फिर भी कार्डियक सेल उसको रिस्पॉन्स नहीं देगा now this is known as a absolute refractory period this is known as a absolute refractory so during the phase 0 and phase 2 of depolarization of cardiac potential so stimulus of any strength if it comes your cardiac cell will not respond and that okay and that period is known as a absolute refractory period okay ये क्या है इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड ये अलग है मैं बोलता हूँ सो ड्यूरिंग दिस पीरियड if any stimulus comes cardiac cell will not respond known as absolute refractory period okay
during the phase 3 and phase 4. So as these phases of repolarization, okay, and if any stimulus comes over here during this phase 3 and phase 4, during this phase 3 and phase 4, if any another stimulus comes, now this is known as a repolarization phase, and during this the cardiac cell may excite if stimulus is strong. So if a strong stimulus comes while action potential is going on, but it is in a 3 or 4 phase 3 or phase 4. So during the phase 3 phase 4 of action potential, if strong stimulus comes, so cell can react that stimulus and cell can excite again, and that is known as a relative refractory period. Relative refractory period. Okay, so automaticity we have seen, excitability we have seen, contractility, action potential, ये पूरा होता है cardiac action potential. So this phase 1, phase 0, phase 1, phase 2, phase 4. So all this cardiac action potential. There is a movement of ions inside the cell and outside the cell. Rhythmic movement of ions inside the cell and outside the cell of your heart, known as the action potential. And what is the absolute refractory period? So during phase 0 and phase 2, phase 0, phase 2, okay, during the phase 0 and phase 2 of depolarization, if another stimulus comes of any strength, your cardiac cell will not respond to that, okay, because already depolarization is going on. That's all. Okay, and this is known as the absolute refractory period, ARP, absolute refractory period. ये टर्म्स आपको किसी ने समझाया नहीं होगा, ये मुझे मालूम है. Okay. Now, phase 3, phase 4, they are known as a repolarization phase, and during this, if any another stimulus is there which is having strong intensity, so at that time your cardiac cell may react or may excite again. This is not the relative refractory period. And these two are the types. These two are the types of effective refractory period. These two are the types of effective refractory. Oh, sorry. These two are the types known as a refractory period. Okay. Now, effective refractory period is also known as a absolute refractory period. Effective refractory period is also known as a absolute refractory period. Are you getting or not? समझ रहे हैं आपको? नहीं. टर्म्स इतना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा आपको, और जिसका कंसेप्ट क्लियर है ना, क्वेश्चन का आंसर सोल्व कर सकते हैं. आर यू गेटिंग और नॉट? डीपोलराइजेशन, हाँ, फेज सेकंड में भी डीपोलराइजेशन हो रहा है, क्योंकि फेज 0 में क्या हो रहा है, सोडियम अरप्टली एंटर हो रहा है थ्रू ए फास्ट सोडियम चैनल. सोडियम इज इन टेकिंग एंट्री इन द सेल through a fast sodium channel, and that due to that there is a depolarization, so voltage will change. So negative voltage of your cell will go into positive side, like positive 15, but now will your cardiac cell will try to cope up with the situation. जो आपको अचानक आपको किसी ने धक्का लगाया तो आप उसको, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक रिएक्ट करती है वैसे. सो इफ देयर इज चेंज इन द एक्शन potential of cell due to entry of sodium ion, your cell will try to maintain the again it by removing the potassium. So in the phase 1 there is removal of potassium, there is the entry of chloride also, so there is a short repolarization period, phase 1. But after that there is a continuous depolarization through a L type of calcium ions, entry of calcium ion through L type of calcium ion channel in the cardiac cell. So that corresponding to phase 0, and phase 3 phase 4 are the repolarization phase. During the phase 3 से यहाँ से क्या होगा, इतना पोटेशियम बाहर जाएगा कि जितना कैल्शियम अंदर आ रहा है उससे बहुत ज़्यादा पोटेशियम बाहर जाएगा, उसके कारण क्या है, वोल्टेज कम होते रहते हैं. एंड ड्यूरिंग द फेज 4 जितना भी पोटेशियम, जितना भी सोडियम अंदर गया है, जितना भी कैल्शियम अंदर गया है, वो सब बाहर आकर देगा सेल और पोटेशियम को अंदर लेगा. इट विल ट्राई टू री एस्टेब्लिश द intercellular negativity. So during phase 0 and phase 2, if stimulus of any strength, if it is coming to your cell, so cell will not respond that stimulus, known as a effective refractory period, okay, or absolute refractory period. What is the relative refractory period? So during the phase 3 and phase 4, if another stimulus of a higher strength, if it comes to cell will respond and will undergo again another cycle known as a relative refractory period. तो क्वेश्चन आता है आपको कि okay, so which of the following period cell can have another excitation if strong stimulus is supplemented to a cell. और आपको ऑप्शन में आएगा
इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, है ना, ऐसा आएगा आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, तो आपको मालूम होना चाहिए. सो ड्यूरिंग द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, so there the cell cannot have another, cannot react to another stimulus, okay? But in the relative refractory period, if stimulus is strong, cell can react. Now cardiac output is what? So whatever all amount of blood that is being pumped by a heart per minute, right? That is known as a cardiac output. Cardiac output is equal to stroke volume into heart rate. को स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट जो होता है उसके ऊपर कार्डियक आउटपुट डिपेंड होता है, राइट? नो, है ना. स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? इट इज अ वॉल्यूम ऑफ ब्लड which is being ejected from left ventricle during the each beat. Then what is heart rate? It is a number of contraction per minute, है ना, heart rate. So कितना होता है heart rate? Around 72. Heart rate is around 72. Stroke volume is around 70 ml. 70 ml क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम. हार्ट रेट कितना होता है? 72 बीट्स पर मिनट. 72 बीट्स पर मिनट. सो you can calculate the cardiac output. 70 into 72, it will come around 4800. So you can say in a rough language 5 liters per minute. Cardiac output is equal to stroke volume into heart rate. Now stroke volume is decided by, ये जो stroke volume होता है ये कौन डिसाइड करता है? It is a volume of blood, volume of blood in the ventricles, volume of blood in the left ventricle. So that will decide the stroke volume. So what if volume of blood is more in the left ventricle? So stroke volume will be more, है ना, and that's why cardiac output will be more, है ना. तो जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ता है कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, है ना. ये फॉर्मूला है उसका, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, है ना. नाउ व्हाट हैपेंस इन द congestive cardiac failure? Either there is a myocardial infection, because of that myocardial muscle is dead, you know, or damaged. Then either there is a long term hypertension, either there is a thyrotoxicosis, either there is a either there is a decreased sympathetic outflow or increased vagal tone. Okay, either there is increased preload or increased afterload. These are the reasons. प्रीलोड इंक्रीज हो गया, आफ्टर लोड इंक्रीज हो गया, मायोकार्डियल इश्यमिया है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका है, हार्ट का मसल जो है डैमेज हो चुका है, हार्ट का मसल जो है डेथ हो चुका है उसका, एंड देयर इज डिपोजिशन ऑफ फाइबर्स इन द मायोकार्डियम, और यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायरॉयडिज्म, दैट इज हाइपरथायरॉयडॉक्सिकोसिस, आइदर यू आर सफरिंग फ्रॉम, है ना, वाल्व डिफेक्ट, है ना, वाल्व डिफेक्ट है आपके हार्ट में, or either you are suffering from Wolff Parkinson syndrome. So all they are the predisposing factors for your congestive cardiac failure. Now what happens in the congestive cardiac failure? I will explain. So before that, these two terms, preload and afterload. So what is preload? Pre मतलब क्या? पहला. Preload. Pre मतलब पहला. And after मतलब क्या? दूसरा. After मतलब बाद में आता है ना after. पहले pre आता है, बाद में after आता है. Preload means what? So whatever blood is coming to your heart, so that is the preload. So whatever blood is coming to your heart, तो कहाँ से आता है भाई? हार्ट में ब्लड, हार्ट में ब्लड आता है वेन से, है ना. जो बॉडी का जो ब्लड है वो खींचता कहाँ? कौन है? कौन लेके जाता है ब्लड हार्ट में? वेन लेके जाते हैं. कहाँ पे लेके जाते हैं? राइट एट्रियम में लेके जाते हैं, सुपीरियर वेना कवा एंड इंफीरियर वेना कवा. So whatever venous is there, whatever venous blood is there, so that is termed as a capacitance, and that is nothing but the preload. जो preload होता है, there is a blood coming to a heart through a veins in a right atrium. So okay, so if preload is increased, right atrium में जो आने वाला blood है वो अगर ज्यादा हो गया तो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में भी ज्यादा आएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ज्यादा आएगा, लंग्स से वापस राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में ज्यादा आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से में अगर ज्यादा गया तो वो क्या होगा, है ना, वो वहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा. बट क्या हो रहा है ना, सो व्हाट हैपेंस इन द योर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. अभी आपको बोला है कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में क्या हो रहा है आपका. सो आइदर देयर इज डैमेज टू योर मायोकार्डियम, मायोकार्डियल डैमेज हो रहा है, इश्यमिया है ना, मायोकार्डियल इश्यमिया है, या फिर वहाँ पे थायरोटॉक्सिकोसिस है. सो दैट्स व्हाई योर हार्ट इज नॉट एबल टू पंप द ब्लड because there is a decreased myocardial tissue. Heart failure means what? It is inability of heart to maintain the proper cardiac output. It is inability to up a heart to maintain the cardiac output.
तो आपका हार्ट कार्डियक आउटपुट जितना चाहिए, नॉर्मल वैल्यू है उसका 5 लीटर, तो अराउंड ऑन एन एवरेज 5 लीटर कार्डियक आउटपुट होना चाहिए. So if your heart is not able to okay, if your heart is not able to produce a sufficient amount of cardiac output, so obviously it will not meet your body's demand. Okay, so heart failure is nothing but the inability of heart to maintain a cardiac output adequate to meet the metabolic demands of your body at all time. Now it may be, now there are two types of heart failure. It may be either acute acute heart failure or chronic heart failure. Okay, acute heart failure or chronic heart failure. So either it can be either right ventricular failure or left ventricular failure. Okay, so now physiology of cardiac muscle contraction. तो cardiac muscle contract कैसे होता है आपका? Structural and functional unit of cardiac muscle is nothing but the, I told you, myocytes. So which is a sarcomere with alternate dark and light band made up from a two filament. जो आपका मायोसाइट होते हैं, मायोसाइट में क्या होता है, दो फिलामेंट होते हैं, मायो फिलामेंट, मायो मतलब मसल, फिलामेंट मतलब स्ट्रिप. तो देयर आर टू मायो फिलामेंट नोन एज एक्टिन. एक्टिन एक होता है एंड सेकंड होता है मायोसिन. एक्टिन एंड मायोसिन, दीज आर द टू मायो फिलामेंट इन द हार्ट. सो एक्टिन जो होता है दैट इज अ थिन, सो एक्टिन इज अ थिनर एंड मायोसिन इज अ थिकर. ओके, एक्टिन मायोसिन, these are the two contractile protein in the myocardium, in the myocyte. Now when these two, actin and myosin, they comes together, there is a contraction of heart respectively. Okay? So physiology of cardiac muscle contraction, structure of your myocardium, functional unit of your myocardium, that is a myocyte, is a sarcomere with alternative dark and light band made from a myofilament. First is actin and second one is a myosin. Actin is a thinner, myosin is a thicker respectively. Okay, now how there is a contraction of these muscles? So myosin जो होता है, the thicker portion of your myocyte, contractile myocyte. So myosin has a one enzyme, intrinsic enzymatic activity is there. So intrinsic enzymatic ATPase activity. So myosin has a intrinsic enzymatic ATPase activity, whereas actin जो होता है, actin has ability to combine with the myosin. Actin has ability to combine with the myosin, reversibly in presence of ATPase and calcium ion. मतलब क्या कि आपका जो मायोसाइट है, जो सार्कोमर है, उसमें लाइट एंड डार्क बैंड होता है और उसमें दो मायोफिलामेंट होता है. पहला होता है एक्टिन जो थिन होता है और दूसरा होता है मायोसिन जो थिक होता है. मायोसिन जो होता है उसमें एक एंजाइम रहता है, सोडियम एटीपेज, और एटीपेज एंजाइम है ना. तो एटीपेज एक्टिविटी होता है उसमें. एंड एक्टिन जो होता है, एक्टिन हैज अ कैपेसिटी टू कंबाइन विद द मायोसिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एटीपेज एंड कैल्शियम. तो जब भी कैल्शियम अंदर जाएगा तो एटीपेज और कैल्शियम के इन्फ्लुएंस में एक्टिन मायोसिन साथ में आएंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेगा मसल को. So calcium activate the myosin ATPase. Okay, calcium ion activate the ATPase present in the myosin, which breakdowns to myosin ATPase. देखो ATPase जैसे लाइपेज होता है. लाइपेज का मतलब क्या है? लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाला. प्रोटीज का मतलब क्या होगा? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना है ना, ब्रेक डाउन करने वाला है ना. तो वैसे ATPase, ATPase मतलब क्या? ATP को ब्रेक डाउन करना. So which will break down the ATP, which is an energy source for excitation, contraction and coupling of cardiac muscle. Are you getting or not? समझ रहे हैं आपको? Now, inotropic action of heart. Inotropic action of heart. Inotropic action means what? So because of the increased intracellular calcium ion, okay, there is a contraction of cardiac muscle and relaxation result from change in the concentration of calcium in the myocardial cytosol. Myocardial cell में जो cytosol होता है, अगर उसमें कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो वहां पे जो मायोसिन एक्टिन है वो साथ में आएंगे और कॉन्ट्रैक्शन होगा. अगर इंट्रासेलुलर कैल्शियम का आयन कम हो गया तो जो मायोकार्डियम का सेल है वो रिलैक्स हो जाएगा. सो इनोट्रोपिक एक्शन ऑफ हार्ट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड इंट्रासेलुलर calcium. Okay, the cardiac contraction relaxation result from the change in the concentration of myocardial cytosol. So contraction relaxation जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? Change in the concentration of calcium in the cytoplasm of your cardiac cell, right? So we will see the next again.
बिकॉज ये बेसिक है, बेसिक एक बार समझ में आया ना आपको, व्हाट आर द एक्शंस ऑफ डिजिटल इज, okay, what will inotropic drug will do, what a chronotropic drug will do, so you will understand each and every single thing. Now cardiac output is determined by first preload. Preload क्या होता है? ventricular end diastolic pressure. So whatever blood that comes to right ventricle, and that pressure is nothing but the ventricular end diastolic pressure, that is a preload. Okay, now, okay, cardiac output is is a function of preload, then myocardial contractility, then afterload. Afterload क्या होता है? ventricular tension during ejection, ventricular tension during ejection. Afterload क्या होता है? It is a resistance to the blood. जैसे arteries जो resistance करते हैं ना, that is also afterload. And whatever blood that comes to heart through a veins known as a preload. Cardiac output is a determined by, cardiac output किसके किसका function है? So preload, myocardial contractility and afterload. So cardiac output depends on these three: preload, myocardial contractility and afterload, है ना? सो प्री लोड ज्यादा है मायोकार्डियल, ओके, प्री लोड ज्यादा है तो ज्यादा ब्लड आएगा उसमें हार्ट में, और ज्यादा ब्लड हार्ट से बाहर भी जाएगा. ओके, आफ्टर लोड ज्यादा है तो हार्ट से ज्यादा ब्लड बाहर नहीं जा सकता, बिकॉज आफ्टर लोड मीन्स देयर इज रेजिस्टेंस. ओके, देयर इज रेजिस्टेंस बाय द आर्टरीज. इफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा है तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा. इफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम है कार्डियक आउटपुट कम होगा. सो कार्डियक आउटपुट is a function of these three: preload, myocardial contractility and afterload. Now next we'll see when myocardial contractility is impaired. Impaired मतलब क्या? Decrease. When myocardial contractility is impaired and when, okay, जब myocardial contractility आपका कम होता है, myocardial contractility कम होता है, तो ब्लड जो आने वाला है हार्ट में वो तो आएगा ही आएगा. Okay? So when myocardial contractility is impaired, the ventricle dilates. है ना, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंपेयर हो रहा है मतलब क्या? मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो रहा है. ठीक. सो इफ देयर इज डिक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बट व्हाटएवर ब्लड इज कमिंग टू हार्ट, दैट इज नॉर्मल, एंड दैट इज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. So due to that, increased volume of blood is there in the heart, and that's why ventricles they dilates, ventricle they dilates, and afterload also increases, and cardiac output will decrease. That's why. So when myocardial contractility is decreased, so ventricle will dilate because of the preload, okay, and because of the dilation of ventricle there is a decreased cardiac output, and in the heart failure same thing happens. So what is heart failure? Decreased cardiac output, decreased cardiac output. So when myocardial contractility is decreased, okay, ventricle will dilate and afterload will increase, and that will result in the decreased cardiac output. Now, ओके, नाउ इफ देयर इज अ डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, कम हो गया आपके बॉडी का कार्डियक आउटपुट कम हो गया, तो मतलब आप भी इमीडिएटली आपको हार्ट फेल होगा क्या? नहीं. सो योर बॉडी विल ट्राई टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट. सपोज योर कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज्ड, योर बॉडी विल फर्स्ट ट्राई टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट. हाउ? बाय activating the neuronal and hormonal stimuli. Okay, by activating the neuronal and hormonal mechanism. Okay, the resultant neuronal and hormonal stimuli following decrease the cardiac output and in turn contribute to increase the afterload. बोलता हूँ कैसे, ये सिंगल लाइन में बहुत सारा आ चुका है. The resultant neuronal and hormonal stimuli. For example, if decreased cardiac output is there, so what will happen? Body will try to increase the cardiac output because you need a more blood to your body. So body will, your brain will release, okay, brain will cause sympathetic outflow. So brain will increase the sympathetic outflow. So sympathetic outflow means what? Sympathetic nervous system में activate हो जाएगा, वहाँ से noradrenaline release हो जाएगा. So noradrenaline will come, it will stimulate alpha receptor, right? So it will increase the peripheral resistance. It will stimulate the beta 1 receptor in the heart, will increase the myocardial contractility. It will stimulate the beta 1 receptor in the kidney, and will activate the RAS system, right? So because of the activation of alpha receptor, so there is increased peripheral resistance. That means there is increased preload. Because of the stimulation of beta 1 receptor of the heart, it will increase the heart rate. But you know that myocardial muscle is damaged. Myocardial muscle ही damage हो चुका है because of the either myocardial infection, because of the myocardial ischemia, heart wall defect, whatever, because of the persistent hypertension. So as myocardial muscle is having less there
there is a less myocardial muscle. So that's why though there is stimulation of beta 1 receptor but there is not increase in the cardiac output. वहाँ पे cardiac output नहीं increase हो रहा, वहाँ पे सिर्फ heart rate increase हो रहा है. So okay, so due to compensatory mechanism your sympathetic outflow will increase, it will try to increase the preload, it will try to increase the heart rate. Force of contraction is not increased because there is a loss of myocardial muscle, and that's why again it will contribute to increase preload and afterload. Okay, and there will be decrease in the cardiac output. Okay, so due to loss of myocardium, due to myocardial infection or myocardial ischemia or due to different genetic reason, so there is a less myocardial and there is a decreased cardiac output. तो cardiac output कम हो गया तो आपकी body will try to, your body will try to increase the cardiac output by two mechanisms. First, it will increase the sympathetic outflow and will try to increase the cardiac output. But cardiac is okay, it will release the noradrenaline. So cardiac output is not increased, but it is increasing the peripheral resistance and heart rate only. That's it. Okay. Now second mechanism, another mechanism, that is activation of your RAS system. So RAS system activate हो जाएगा, वहाँ पे फिर renin release होगा, conversion of angiotensinogen to angiotensin 1, angiotensin 1 to angiotensin 2. Angiotensin 2 will again cause vasopressing activity. ये फिर से ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा एंड इट विल इंक्रीज प्रीलोड एज वेल एज आफ्टर लोड, दोनों भी लोड इंक्रीज करेगा हार्ट के ऊपर. देन अगेन aldosterone secretion will be there. So angiotensin second will also stimulate the aldosterone. So aldosterone secretion will be there and aldosterone will increase sodium and water retention. Sodium water retention होगा किडनी में तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कौन सा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, और वो वॉल्यूम की वजह से फिर से प्रीलोड बढ़ेगा. So compensatory mechanism is there to increase the cardiac output, but as there is a damage to your myocardium, myocardial muscle has lost. So that's why, okay, that's why body will try to increase the cardiac output, but it is not increasing due to muscle loss or myocyte loss. Okay, so these are the compensatory mechanism. Will try to increase the cardiac output, but cardiac output increase नहीं होगा, बस वहाँ पे preload and afterload increase होगा and heart rate increase होगा. Now this reduces the cardiac output further while increasing the myocardial oxygen demand. और जैसे हार्ट रेट बढ़ता है तो myocardial मतलब हार्ट का काम बढ़ रहा है and that's why myocardial oxygen demand is also increasing. So this reduces the cardiac output further. That okay, पहले ही cardiac output कम है, फिर से compensatory mechanism जो है बॉडी के वो भी एक्टिवेट होके फिर भी cardiac output नहीं बढ़ रहा है लेकिन हार्ट का काम बढ़ा रहा है. So increasing the myocardial oxygen requirement, okay, and they establishes the vicious cycle. vicious cycle क्या होता है छोड़ो, मतलब बस यही कर रहा है कि ये और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डिक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट में. कॉम्पेंसेटिंग मैकेनिज्म, आर यू गेटिंग और नॉट? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूँ. हार्ट फेल्योर इट मे बी ड्यू डिफरेंट रीजन. हार्ट फेल्योर में बी आइदर ड्यू टू सीवियर एनीमिया, थायरॉइडोक्सिकोसिस, विटामिन B12 deficiency, vitamin B6 deficiency, and myocardial infarction, myocardial ischemia. So this is the reason for your congestive cardiac failure or heart failure. Now most sensitive index for cardiac output measurement. Okay, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Most sensitive index for cardiac output determination is a left ventricular ejection fraction. When we was discussing about your cardiovascular system at the time also I have told you. The most sensitive index for cardiac output is a left ventricular ejection fraction. How much amount of blood which is being ejected from left ventricle during each systole, known as a left ventricular ejection fraction. Okay. Normally left ventricular ejection fraction is a 67 to 80%. 67 to 80% इतना होता है नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन. अगर ये कम हो गया उसका मतलब है आपका हार्ट क्या हो रहा है, फेल हो रहा है. This left ventricular ejection fraction is less than 40%. If your left ventricular ejection fraction is less than 40%, so that means you are having systolic heart failure. Okay. In case of severe heart failure, this left ventricular ejection fraction will decrease up to 20%. तो 20% ही आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन है, मतलब उसका सीवियर हार्ट फेलियर है. नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होता है, 67 to 80%. ये आपका नॉर्मल वैल्यू है. ये कम हो गया मतलब क्या हो रहा है, आपके हार्ट का हो रहा है आपका. So if this value is decreased, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है आपका कि मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स फॉर कार्डियक आउटपुट
determination is a left ventricular ejection fraction. Normally it is a 67 to 80%. Now in case of systolic heart failure, so this left ventricular ejection fraction is less than 40%, and in case of severe heart failure it is around 20%. है ना. लेफ्ट वेंट्रिकुलर ejection फ्रैक्शन कम हो रहा है, मतलब वही कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है. सो नाउ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. क्यों हो रहा है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर? A failing heart is characterized by inability to provide a sufficient amount of cardiac output for the body's metabolic needs, right? So heart failure is nothing but the failure of heart to pump the blood. Means you know that heart is acting as a pump. So if it is fails, okay, so failure of heart failure is nothing but the failure of heart to pump the blood, mostly left ventricle, because left ventricle is going to pump only blood in the various body arteries. तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ही ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा. सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ट फेलियर मींस लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर. नाउ इट इज बिकॉज ऑफ द सेवरल रीजंस. ओके, जैसे होता है प्रेशर ओवरलोड. ओके, नाउ इट इज मोस्टली ड्यू टू द हाइपरटेंशन. प्रेशर ओवरलोड क्यों होता है? ड्यू टू हाइपरटेंशन एंड स्टेनोसिस ऑफ कार्डियक वाल्व. कार्डियक वाल्व का अगर बंद हो गया तो pressure overload, volume overload. Another reason for this cardiac congestive cardiac failure, volume overload. Volume overload कब होगा? As in a congenital disease. Congenital मतलब genetic disease, genetic heart disease. Okay, recurrent lesion in the mitral wall. Mitral wall में कोई lesion है, कोई जख्म है. Aortic wall में कोई defect है. Loss in the cardiac muscle. Loss cardiac muscle कब loss होगा? Due to myocardial infarction और ischemic heart disease. इस्मिया है हार्ट में तो मायोकार्डियम लॉस होगा. डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी. डिक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी. कब कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगा? ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ मसल. इन्फेक्शन हो गया मायोकार्डिटिस, तो इसमें कम हो सकता है. या फिर जैसे इस्मिया हो गया, मसल लॉस हो गया, तो डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी. अनदर रीजन फॉर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, रेस्ट्रिक्टेड कार्डियक फिलिंग एज इन कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस. डायस्टोलिक हार्ट फेलियर जिसको बोलते हैं, इसमें क्या है, कार्डियक में ज्यादा ब्लड आता नहीं है ना. एक तो क्या होता है, ब्लड बहुत आ रहा है हार्ट में लेकिन मायोकार्डियम खराब हो चुका है, तो पंप नहीं हो रहा है ना, पंप नहीं हो रहा है. दूसरा रीजन क्या होता है, तो वो उसमें भी अगर प्रेशर ओवरलोड हो गया या फिर वॉल्यूम ओवरलोड हो गया ना, डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, उसके कारण डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होता है. दूसरा एक होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर. मोस्टली सिस्टोलिक हार्ट फेलियर ज्यादा होता है. देयर आर टू टाइप ऑफ हार्ट फेलियर. Systolic heart failure means failure of heart with for the systolic function of heart, so contraction है ना. So mostly वही होता है heart failure. But diastolic failure भी होता है. क्यों होता है? Due to pericardium में infection हो गया है, so pericarditis. Due to that there is a restricted filling of heart. Heart में पहले ही blood कम आ रहा है, तो obviously cardiac output भी कम होगा, right? So there are two type of heart failure: systolic heart failure and diastolic heart failure. Systolic heart failure is because of the excessive pressure overload, excessive blood volume, loss of cardiac muscle, myocardial infarction, and thyrotoxicosis, genetic disease, heart defect, decreased contractility. And diastolic heart failure is because of pericarditis. Now that everything result in the decreased cardiac output. ये सब क्या होता है? cardiac output decrease कर रहा है. Less than 60 है ना, less than अगर वो 65-75 से कम होता है, so decrease in the cardiac output. और 40 से कम होता है तो systolic heart failure. Now as there is a decreased output of cardiac output is decreased, so compensatory mechanism of heart will activate, so increase in the diastolic tension. Preload increase होगा. क्यों? Because of the activation of your adrenergic nervous system. तो वो अल्फा रिसेप्टर के जाके ऊपर स्टिक करेगा ब्लड वेसल को और प्रीलोड बढ़ाएगा. देन एट्रियल स्टेज मतलब क्या? एट्रियम में ज्यादा ब्लड आएगा, नॉर्मल से ज्यादा ब्लड आ गया एट्रियम में, आर्टेरिया स्ट्रेचिंग होगा, उसका डायलेट होगा. एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, that will also contribute to increase in the blood volume and also increase in the preload as well as afterload. But myocardium damage है, myocardial muscle कम है, इश्चेमिया है, तो myocardium contract नहीं हो पा रहा प्रॉपर से. So that's why क्या हो रहा है कि जितना बॉडी को ब्लड पंप करना है, ब्लड ने जितना बॉडी को ब्लड पंप करना है हार्ट ने, वो पंप नहीं कर पा रहा है, तो और बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है हार्ट में, तो क्या हो रहा है? कंजेशन हो रहा है ना, बहुत ज्यादा ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है
है ना, क्योंकि कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहे हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है हार्ट में, लेकिन हार्ट से ज्यादा बाहर नहीं जा रहा है। तो क्या हो रहा है, हार्ट में क्या हो रहा है, कंजेशन हो रहा है। कंजेशन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर और कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा है हार्ट में, मतलब प्रीलोड बढ़ा है ना, वॉल्यूम बढ़ा है ब्लड का, प्रीलोड बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है, और आफ्टर लोड भी बढ़ा है, आफ्टर लोड भी बढ़ा है, बट कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है, हार्ट में ही रह रहा है। सो वेंट्रिकल्स दे आर नॉट एम्प्टिंग प्रॉपरली, है ना, जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली नहीं हो रहे, इसके कारण वो पूरा ब्लड इजेक्ट नहीं कर पा रहे। सो वेंट्रिकल दे आर नॉट इजेक्टिंग होल ब्लड, वट एवर ब्लड इज इन वेंट्रिकल। So that's why lot of blood it is going to be collected in the heart, and that's why size of your heart is increasing. So ventricles will dilate, atria will dilate, and your heart will fail. Okay, so that's how there is a heart failure. Now if heart failure is there, congestive cardiac failure is there, then what is your treatment? Okay, I know ये इतना किसी ने बोला नहीं होगा आपको, ना ही आपके कॉलेज वालों ने, ना किसी क्लास में गारंटेड है ये जो बोल रहा हूँ। You can see over here again same thing I will explain. Okay, same thing I would like to explain again. तो क्या होता है acute heart failure? Acute heart failure, just focus on this slide. Acute heart failure क्या हो रहा है, heart failure मतलब क्या है? So in case of acute heart failure or chronic heart failure, same thing, थोड़ा बहुत difference होता है. So there is a decreased contractility of your myocardium. As there is a decreased contractility, contraction कम हो रहा है हार्ट का, तो क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा है, कम हो रहा है. सो इन acute heart failure there is a decreased contractility, there is a decreased cardiac output. Okay, as there is a decreased cardiac output, your body will try to compensate it. The body will try to increase the cardiac output by compensatory mechanism. And what are these compensatory mechanism? First, your body will increase the sympathetic outflow. Body will increase the sympathetic outflow or activity. Now sympathetic activity increase किया मतलब क्या होगा, noradrenaline release होगा. So it will act on a alpha receptor of your blood vessels, stimulate the alpha receptor. So in the veins, it will it will increase the it will cause vasoconstriction as well as arteriolar constriction. ये artery को भी constrict कर देगा, blood vein को भी constrict कर देगा. So whatever veins are constricted, that will increase the preload. क्योंकि constrict हो गया मतलब preload बढ़ गया, हार्ट में ब्लड ज्यादा आएगा ना. आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हुआ है मतलब आफ्टर लोड बढ़ गया, आफ्टर लोड बढ़ गया, right? So noradrenaline by acting on a blood vessel, it will increase the preload as well as afterload. Then again noradrenaline will act on a heart, beta 1 receptor of your heart, beta 1 receptor of your heart. So what will it do, it will increase the heart rate and will try to increase the force of contraction, but it is failing to increase the force of contraction. तो वो force of contraction नहीं increase हो रहा, लेकिन heart rate increase हो रहा है. So it will try to maintain the cardiac output, but it fails to maintain the cardiac output, you know, fails to maintain the cardiac output. Again, this beta 1 receptor will also stimulate the kidney. Okay, it will stimulate the juxtaglomerular cells of kidney, release the renin. Now this renin, what is the role of renin? Renin will convert this angiotensin chain, which is an inactive glycopeptide in your blood. Inactive है ना, glycoprotein होता है, inactive glycoprotein in the blood. So that is converted into angiotensin 1. Now angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 by this enzyme ACE, है ना. ACE मतलब एक का नहीं होता है, ये है angiotensin converting enzyme. So angiotensin second will be there. Now this angiotensin second will act on a angiotensin receptor, 81 receptor, and it causes the vasoconstriction. तो vasoconstriction मतलब ये blood vessel को constrict करेगा, मतलब arteries को भी करेगा, veins को भी करेगा. It will increase again preload and afterload, load afterload increase. ये angiotensin second है ना, तो angiotensin second जो है ना, ये तो vasoconstriction करता है ना. दूसरा एक काम करता है, ये दूसरा क्या करता है आपका, ये दूसरा इसको भी स्टिमुलेट करता है, इसको aldosterone को. So it will also stimulate the aldosterone. So what is the role of aldosterone? To retain the water and sodium. So it will increase the salt and water retention. Water and water retention करेगा मतलब क्या, ब्लड वॉल्यूम का इंक्रीज करेगा. ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया मतलब क्या, और भी ज्यादा कंजेशन होगा. Aldosterone also causes the remodeling. Remodeling मतलब क्या, also causes the remodeling of your myocardial muscle. मतलब ये क्या करेगा, remodeling करना है मतलब क्या. So it will try to maintain the heart rate by stimulating the heart. हार्ट का रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा. तो उसके कारण क्या है, एक्टिविटी हार्ट का बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजन तो नहीं मिल रहा है, उसको कार्डियक आउटपुट नहीं मिल रहा है ना, कम मिल रहा है. सो दैट्स व्हाई योर मसल विल स्टार्ट डाइंग. देयरफॉर
death of myocardial tissue, and that's how there is a congestive cardiac failure. Congestive cardiac failure, CCF. Are you getting congestive cardiac failure? अभी देखो, what kind of drugs that you can use in the congestive cardiac failure? What kind of drugs that can be used in the congestive cardiac failure? तो आपको ये मालूम हो रहा है कि congestive cardiac failure में क्या हो रहा है ना? तो heart is not able to pump the blood. Heart is not able to pump the blood to meet the requirement of your body. So basically, there is decreased cardiac output, right? So decreased cardiac output. So now decreased cardiac output can be increased by cardiotonic drug. Cardiotonic drugs, these are the drugs which increase the cardiac output without increasing the oxygen demand of cardiac muscle, known as a cardiotonic drugs. Cardiotonic drug में आता है आपका डिजिटल डिटॉक्सिन वगैरह, बाद में देख लेंगे, ठीक है. बट बाकी ड्रग भी कार्डियक इसमें यूज कर सकते हैं. कौन से है ना? सो दोज ड्रग व्हिच विल डिक्रीज द load and upper load. So nitrates, they are known as vasodilator, venodilator. They will decrease the preload by dilating the vein. Then hydrolyzin, arteriolar dilator, diazoside oil, they will decrease the upper load. You know, same drug will be active over here also. Yeah, we are वो active करेगा ही. So they will decrease the preload and upper load. Preload decrease हो गया, upper load decrease हो गया, मतलब क्या? हार्ट में ब्लड कम आएगा, है ना? और हार्ट का ब्लड बाहर जाने के लिए रेजिस्टेंस भी कम रहेगा, ठीक है. तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करने में थोड़ा बहुत मदद करेगा, ठीक है. देन अगेन यू कैन ब्लॉक द बीटा रिसेप्टर ब्लॉक किया आपने यहाँ पे. तो क्या होगा कि बीटा रिसेप्टर ब्लॉक किया तो हार्ट का हार्ट रेट कम हो जाएगा. हार्ट रेट कम हो गया मतलब क्या? हार्ट का काम कम हो गया, है ना? काम कम हुआ मतलब उसका ऑक्सीजन भी कम लगेगा, उसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कम रहेगा, राइट. अगेन ब्लॉकेज ऑफ बीटा रिसेप्टर इन द जेजी सेल, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल. यहाँ पे एक ब्लॉक किया तो रेनिन का रिलीज नहीं होगा. तो रेनिन का रिलीज नहीं होगा तो ये एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा, 1 से लेके 1 से 2 भी नहीं बनेगा. 2 क्या करता है आपको मालूम है? वैसोकंस्ट्रिक्ट करता है. अगर 2 नहीं बना तो वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस और प्रीलोड आफ्टर लोड डिक्रीज हो जाएगा. और ये एंजियोटेंसिन सेकंड इसको स्टिमुलेट करता है, आपको मालूम है. ये बना ही नहीं तो अल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेशन नहीं होगा ना. एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है? वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है बाय एक्टिंग ऑन 81 रिसेप्टर. तो आप पहले तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी आप ब्लॉक कर सकते हो. जैसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर सकते हो, एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स. तो यहाँ पे भी एक टारगेट है, ये भी ड्रग्स यूज कर सकते हो आपस में. अगर एंजियोटेंसिन सेकंड बना तो वो एक्ट होगा 81 रिसेप्टर के ऊपर. यू कैन ब्लॉक द 81 रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स. Now aldosterone is there, so aldosterone will increase the sodium water retention and will cause increase in the blood volume and will cause increase in the uh, venous return and will cause decrease in the cardiac output. So you can block this aldosterone by using spironolactone. Again, whatever sodium water retention is there, so you can decrease the volume of blood. जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा ब्लड का वो डिक्रीज कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? बाय यूजिंग डायोटिक्स. These are the different drugs used in the congestive cardiac failure. When same thing is explained over here, again you can see. जैसे आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका है और मायोकार्डियल इश्चेमिया है. So if there is a myocardial infection, myocardial ischemia, so there is a decreased activity of myocardial muscle. So there is a decreased activity of myocardial muscle. There is a decreased cardiac output, reduced cardiac output. और cardiac output decrease हो गया तो क्या होता है? कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म चालू होते हैं. कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म क्या है? कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करने के लिए बॉडी ट्राई करेगी. कैसे करेंगे ट्राई? सो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म विल बी एक्टिवेटेड, राइट. इट विल इंक्रीज द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, राइट. सो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन विल ट्राई टू इंक्रीज द, है ना, नॉरएड्रेनालिन रिलीज होगा, ब्लड वेसल के ऊपर जाएगा, वैसोकंस्ट्रिक्ट करेगा, प्री लोड बनाएगा, है ना, हार्ट का काम बढ़ाएगा, है ना. देयर इज नोन एज इम्पेडेंस. देन अगेन there is also activation of system, RAS system, renin angiotensin aldosterone system. So वो भी क्या करेगा? Again it will also increase the preload after load, also increase the volume of blood. Yeah. Okay, so RAS will increase the volume of blood. Okay, volume expansion. So volume expansion. So initially it will increase the stroke volume, but later on it will decrease the cardiac output. Because of the increased volume, there is a increased entry of blood in the ventricles. So that's why ventricles will dilate. Ventricular dilation, that is known as a remodeling.
Then again, RAS activation causes the स्टिमुलेशन ऑफ अल्डोस्टेरोन। तो अल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम वाटर रिटेंशन करता है, मतलब ब्लड ब्लड को बढ़ाता है, वही ना। अल्डोस्टेरोन विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। देन अगेन दिस एक्टिवेशन ऑफ दिस सिस्टम विल इंक्रीज द एंजियोटेंसिन सेकंड एंड व्हिच इंक्रीज द सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, विल इंक्रीज द इम्पेडेंस, विल इंक्रीज द इम्पेडेंस। इम्पेडेंस मतलब क्या, आपकी आर्टरीज को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। and increased impedance again there is a that leads to ventricular remolding, मतलब ventricular को dilate कर देता है again, and all this result in the decreased cardiac output again. That is nothing but the congestive cardiac failure. So what type of drugs they are used in this? So who will increase the myocardial contractility? So inotropic drug, positive inotropic drug will increase the myocardial contractility. So digital is there, digitoxin. Then you can decrease the preload by using vasodilators. जो vasodilators the nitrates हो रहे, you can decrease the blood volume by using diuretics. Okay. Then you can use alpha blockers, beta blockers. Okay. So beta blockers you can use. So will decrease the activity of heart rate, will decrease the consumption of oxygen in the heart. Also will block the renin-angiotensin system. And you can also block this system properly by renin antagonist and ACE inhibitors, AT1 receptor inhibitors. Then also you can block the spiral aldosterone activity by using aldosterone antagonist. ये सब क्या कर रहे हैं कि वर्कलोड बढ़ा रहे हार्ट का, और हार्ट का पंपिंग एक्शन कम हो रहा है और हार्ट में ब्लड ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या है, हार्ट डायलेट हो रहा है। तो वही आपको डायलेट अगर हुआ है तो उसको बोलेंगे आप हाइपरट्रॉफी, वो हार्ट का साइज बड़ा हो जाएगा और हार्ट फेल हो जाएगा। So you can also use arteriolar dilators, so which will decrease the afterload, that is known as the impedance. So that's how this drug will act. Are you getting or not? समझ रहे हैं आपको? I will check, इसको सेव कर लेता हूँ।